Well, hello everyone, and welcome to the session, guys. So, guys, your phase 1 exam for IFSCA 2025 is over, and in this session, we will be discussing complete analysis for paper 1, and we will also be providing you and we'll also be discussing with you detailed questions for your general awareness part as well in this session. So, guys, don't forget to like the session and don't forget to subscribe to the channel, and do let me know if I'm audible and if I'm visible to you guys. It'll just take a second. So do let me know, guys, if I'm audible and if I'm visible to you. All right. So let's begin, guys. So today was your IFSCA Phase 1 paper for 2025 exam, and the paper was, we can say it was on the moderate side, and it was, I mean, at least the QRE part, that was on the easier side, and we will talk about the GA part with Devanshu sir after that. So first, let us start with the detailed analysis for your quants, reasoning and English part. So guys, let's start with Vishnu sir is somewhere busy today, so I will be helping him out. I'll be telling you, as you know, to the best of my abilities, what are the detailed questions that were asked in quants, reasoning as well as English part here. So first of all, let's begin with the quants part. Now guys, quantitative paper, as far as Vishnu sir told me, it was moderate this year. So it was not too big of a challenge for the students to score decent marks in quantitative aptitude. So there were 25 questions on quantitative aptitude. And I'll be telling you the details of these 25 questions now after this, and then followed by reasoning and then by English language. So guys, what sections were focused in these 25 questions? Let's discuss that. But before we set out on this, we need to understand the difficulty level of the questions was moderate this year. So the questions were moderate. They were not very difficult, very challenging. Guys, do let me know how many questions did you attempt in quants, reasoning and English section, right? So what was the total number of attempt for phase 1? Okay, paper 1, phase 1. So do let me know in the chat box, and let's see if we are in the safe zone or not. So in the meantime, let me explain the questions to you. So guys, this time there was no simplification asked in the paper. So this was something new. There was no simplification based question in the exam. So simplification was not there. Now let's begin with the first type of question. Now guys, there were quadratic equation based questions, guys. So there were quadratic equation based questions. Quadratic equation based questions, and there were 6 questions based on quadratic equation. So these were doable. Students were telling us, sir, these were easily manageable. They were not very challenging, and students were able to target them and they were able to solve them easily. So there were 6 quadratic equation based questions. Then second type of questions that we faced in the exam was number series based questions. Now these again, these questions were doable. Students were able to solve these questions. So there were 4 questions based on your number series based questions. Then guys, followed by DI, data interpretation. So there were quite a few questions on DI. So there was a table based DI given to you in the exam. There was a table based DI given to you, and this was basically about NGO and the total number and the difference between the number of people working, or I'm not sure exactly, but this was a table based DI, and there were 6 questions based on this DI, guys. So there was data interpretation based question, table DI was given, and there were 6 questions on that. Then fourth type of question was arithmetic based questions, guys. So there were arithmetic based questions, and these are individual questions. Okay, let me write them down in the next slide. So guys, let's say 6 plus 4, 10, 4 plus 10 plus 6 is 16. So total 16 questions from these 3 questions. 6 questions from quadratic equations, 4 questions from number series, and 6 questions based on a DI based on table based DI. Next was, guys, your arithmetic based questions. So there were arithmetic questions in the exam. There were total 9 questions based on arithmetic. I'll tell you which topics were covered in arithmetic. There was 1 question based on profit and loss. Then there was 1 question based on time and work.
Now guys, exactly, we will we will create a memory based paper on this, but for now this is as far as we know. Then there was a question based on simple interest. Another question was based on partnership. So there was a question this time on based on partnership. Then there was a question based on mensuration. So this was a 2D based mensuration. So 2D mensuration based question. There was one question on this. There was one question on average. There was one questions on income and expenditure. Income and expenditure. And okay, let's write here, guys. There was one questions on boat and stream. And then there was one question based on number based question. So you were given a few numbers and you were supposed to solve that. So one question on all these 9 topics: profit and loss, time and work, simple interest, partnership, mensuration, 2D mensuration, average, income and expenditure, boat and stream, and number based questions. So these were 9 questions based on these topics. So one question for every topic, right? So this was for your quantitative aptitude, guys. Now if we talk about reasoning now, let's move to the reasoning section, guys. Now in reasoning, there were again 25 questions, but guys, as students were telling me, reasoning was on the lengthier side this year. So reasoning was very lengthy. There were too many questions and there was too little time. So reasoning can be said difficult just for the just because there were very lengthy questions in reasoning. So reasoning based questions, let's discuss that. First was your seating arrangement based question, guys. So let's understand one by one. So seating arrangement based questions. There were quite a few of them actually. So first was seating arrangement based questions. Now the first question that was given to you was basically based on uncertain number of people. Uncertain number of people were mentioned and you had to find it. They were facing north. So uncertain number of people who were facing the north direction. So there were 3 questions based on the seating arrangement. Then there was another seating arrangement based question which was circular arrangement, guys. Now this was circular arrangement. Just look at the number of questions in reasoning this year, guys. Reasoning was very lengthy. So circular arrangement, they told us there were 8 people in the circular arrangement and you had to rearrange them according to the instructions given. There were 5 questions based on circular arrangement based sitting arrangement question. So there were 5 plus 3, 8 questions on sitting arrangement. Next is, guys, your puzzles. Let's talk about puzzles as well. These are the the trickiest of the questions asked in reasoning part. So puzzle based questions, there was one puzzle based on box based puzzle was there, wherein they had given 9 boxes. So there was a box based puzzle wherein there were 9 boxes and they had given 5 questions on a box based puzzle. Then there was another puzzle which was a month based puzzle, guys. So there was month based puzzle wherein they had mentioned 10 people. So it was basically based on month as well as a particular date in a month. So it was a date and month based puzzle and there were 5 questions on this puzzle as well. So puzzles, they were worth 10 marks in this paper. So 5 questions on box based puzzle and 5 questions on your month based puzzle. Then guys, this time there was no syllogism based question asked in reasoning part. So remember, there was no syllogism in reasoning part this year. Next, let's look into the critical reasoning. So there were 2 questions this year which were asked on critical reasoning part. So there were 2 questions on critical reasoning. Let's talk about inequality. There were inequality based questions. There were 3 questions on this inequality, wherein 3 questions, you were given 3 statements and you had to find the inequality between these statements. So 3 statements based inequality question. There were 3 questions on inequality. So 5 plus 5, 10, plus 2, 12, and then 3, 15. So these are 15 questions. Let's move further. Then we had your coding and decoding based questions, guys.
we had coding and decoding based questions. So there was one question which was, and this was logic based, guys. So this coding and decoding was logic based. Then we had alphanumeric series, guys. We had alphanumeric series based question. There was one question on alphanumeric series, which was basically forward and backward linkage based question. So forward and backward was given. I mean, basically the alphanumeric series was basically based on forward series and backward series as well. So that was another one question for this. Then there was no direction based question. There was no blood relation based question, guys. And there was one question, I think we have mentioned inequality, right? So 5 plus 5, 10, then 12, and then 15, inequality based question. And then there were two questions based on coding and alphanumeric series. Then I had mentioned critical reasoning, right? In the previous page, I think I had, yes, there were critical reasoning based questions. All right. Right. Then there was box based, month based. Yes, guys. Then there was circular arrangement based. There was a circular arrangement based sitting arrangement, which was 5 questions once again. So and then there was box based puzzle, and then there was month based puzzle. I think I've mentioned this. So box based puzzle, 5 questions. Then month based, again 5 questions. Then there was uncertain number of people, guys. I think I've mentioned that. So there was 5 and plus 3, 8 questions on sitting arrangement. So let's look into that. So okay, right. So sitting arrangement 3, circular arrangement 5, 8. 8 plus 5 questions based on box based puzzle, 5 questions based on month based puzzle. So that is 18 plus 2 questions on critical reasoning, 20, 3 questions on inequality, 23, and I think I've mentioned it again. So there was this one question based on coding and decoding and one question based on alphanumeric. So that makes it 25 questions. So that is why, guys, they told me that reasoning was very lengthy this year. And the reason for that is there were too many questions to solve, and there were not, there was not enough time to solve all these questions. Now let's come to the English part, guys. Now, English was again on the moderate side. There were, the questions were doable, but somebody has to be well practiced to, to score well. Although, guys, you only need to score 30 out of these 75 marks. So quants reasoning English, the basic cutoff is 30. So if you have scored beyond 30, I think you are good to go. So nothing to worry about. But let's look at the questions, guys. First question in English was basically based on reading comprehension. Now, guys, we will also discuss detailed questions, exact questions for general awareness part. Devanshu sir will be with us in a little while, and he'll be sharing with you detailed exact questions with their solution as well. So right now we are giving you analysis for quants, reasoning, and English. So first was reading comprehension based question. So there were 10 questions on reading comprehension, out of which there were 2 questions based on vocabulary. I think we do have the words as well. The words were quite simple. I'll give you, the exact words. So the questions, the words that were asked was immune. One was immune, and the other was term. So terms and conditions wala term. Right. These 2 questions were based on your vocabulary, and then there were 3 fill-ups based questions in the comprehension itself. So 5 questions on vocabulary, and then 5 questions based on comprehension. So that is total 10 questions for reading comprehension part, guys. This was the biggest chunk of the paper. Rest of the questions were smaller and easier to do. Second, there was, guys, sentence improvement based question. So sentence improvement based question. There were 2 questions on this. What was given to you? 5 statements were given to you, and you had to find which statement out of these given 5 statements is correct statement. So you had to find not incorrect, but the correct one. So that was, maybe a little challenging for maybe, according to the time, that might be a little challenging. So sentence improvement, 2 questions. Let's move to the next part. Then there was a word and phrase replacement part here. So word and phrase replacement based questions were given. So you were given a phrase or
a word given in bold in the sentence, and you had to find where is it is, which of the given options can replace this if needed. So there were 4 questions based on word and phrase replacement. Let's talk about the next part, sentence rearrangement. These were the easiest ones, the students were telling me. Sentence rearrangement. So not parajumbles, but sentence rearrangement, guys. You were given, only very small A, B, C, D ones, right? One sentence is, scattered into 4 parts, jumbled into 4 parts, and you had to rearrange them. So sentence rearrangement had 3 questions to it, easily doable. The next was word usage. So you were given a word or maybe words highlighted and you had to see which of the given sentences has used those word or words correctly. So there were 2 questions based on word usage, and then last but not the least, double fillers. So there was no closed test, there was no parajumble this year, only double fillers, word usage, sentence rearrangement, word and phrase replacement based questions. So there were double fillers questions in the exam, and there were 4 questions based on double fillers. So that was your number of questions and the type of questions for English language. 4 for double fillers, 2 for word usage, 6, 3 for sentence rearrangement, 9, 4 for word or phrase replacement, 9 plus 4, 13. Then 2 questions based on your sentence improvement, 15, and then 10 questions based on your comprehension part. So this was a detailed analysis and the type of questions that were asked for quant's reasoning and English section, guys. You attempted 0 in quant, but overall 15 paper 1. Devil mole, okay. Keep your fingers crossed. Paper 2 analysis will happen after this session, guys. All right. 23 reasoning, 21 maths, 19 English. I think, Abhinav, you are good to go. Right? Yeah. Passage was not very simple. I think the passage was basically based on, okay, guys, let me also tell you what the passage was about. Passage was basically based on 2 authors had written a book, and the passage was basically about the ideas that have been used in that book, used in that novel actually. The passage was basically about 2 authors had collectively written a novel, and what ideas were discussed in the novel was the theme of the passage. See, if you had a regular reading habit, NABARD grade A, probably that would not seem difficult to you. English was lengthy, especially the passage, right, Adya? Because there were 10 questions based on it. So if there is a question worth 10 marks, it is supposed to be lengthy. But if you follow reverse reading, if you know the trick that I only have 5 questions based on the passage, let's note down the keywords from the questions first and then read the passage with skimming. So if you know that skill, if you know that trick, I think probably this would seem easier to you. All right. So guys, that was all about your quant's reasoning and English part. Now we will delve towards general awareness part. So just give me 1 second, guys. All right. So this is your general awareness part, and now Devanshu sir will help you with it. Sir, please. Thank you, Narvi sir. So my future officers, I really believe that your exam has really gone well today. So right now, Narvi sir has already discussed with you all the important parts related to your, the quant, reasoning, English, and now we will be delving into the general awareness part for the today's IFSCA examination, right? So I hope that the screen is properly visible to all of you. Let me zoom in a little bit so that it is really good for you. Just give me a second. So in the meantime, guys, you can tell me in the chat box that how many attempts you did in this particular paper. तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है इस पेपर में, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर. सो व्हेन इट कम्स टू द जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दैट राइट नाउ आई एम हैविंग around basic idea of the 25 questions, but yes, 23 to 24 questions I will be telling you along with the answers as well. ठीक है. So before that, what were your number of attempts in the GA part? Let me tell you guys, as per the examination that we have seen, the questions were really quite easier in the nature. ठीक है. Although paper थोड़ा सा moderate level पर हम कह सकते हैं, easy to moderate level, inclined towards moderate only, right? But we have seen that the questions are basically from the last 3 months and the questions were quite doable in nature, क्योंकि surface level से direct headline से आपके questions पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है. तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को. तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया था इंडिया एआई मिशन के ऊपर. सो दे हैव बेसिकली मेंशन्ड दैट इंडिया एआई मिशन बेसिकली एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, एंड दे हैव साइंड एन एमओयू with one of the organization to cooperate on AI solutions for better crops.
So guys, to this question, what is the right answer? Let me tell you, the yellow part which I have mentioned here in the PDF is basically the right answer to the question. Okay, so here you can see the Ministry of Electronics and Information Technology is that particular ministry which under which India AI mission is all about, right? And when it comes to the organization with which this MOU was been signed, that is the Bill and Melinda Gates Foundation with which India AI mission has signed this MOU. And absolutely this is the right answer. So Devil is saying that 8 in GA, but he is sure that 5 questions are really correct. Okay, that's really good. दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. So just give me a second. Yes, now I think it will be really good for all the people. Okay. So here you can see when it comes to the next question, the question was on the BRICS business meet. So my dear friends, BRICS business meet was held recently. The question was on a very easier line, that where exactly this particular BRICS meet took place. So it was Rio de Janeiro, Brazil, where this particular ब्रिक्स समिट टुक प्लेस. ठीक है, सो हमेशा कहते हैं आपको कि जब भी कोई ऐसी समिट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसका वेन्यू को पता होना बहुत जरूरी है. और इसी वेन्यू पर एक आसान से इंफॉर्मेशन पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन. दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एमओयू विद बैंक ऑफ बड़ौदा टू फाइनेंस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉर द एमएसएमई कस्टमर्स. तो एमएसएमई कस्टमर्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन से ऑर्गेनाइजेशन एमओयू साइन किया? द राइट आंसर वाज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी. सो दोस्तों आई होप कि आपने भी यही ऑप्शन टिक किया होगा एग्जाम के अंदर जो आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो काफी डुएबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट हेडलाइन से क्वेश्चन था ये, जो कि न्यूज़पेपर में आया था. आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव. दोस्तों एक और ऐसा क्वेश्चन जिसका सिर्फ और सिर्फ वेन्यू ही पूछा गया था कि इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव जो कि रिसेंटली फिक्की ने होस्ट किया, ये कहां पर होस्ट किया गया? द आंसर वाज हैदराबाद. तो दोस्तों आप अपने पास एक पेन पेपर लेके बैठिए, आप देखिए कि आपने यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर किया था, सो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा जीए का, और उनको मजा आ गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके मेजरली लास्ट 3 मंथ से थे और काफी इजियर लाइंस पर थे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डिजिटल पेमेंट ऑन 22 सितंबर. दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे और 22 सितंबर जिस डेट से इसको इंप्लीमेंट किया गया, सो उसी दिन एक हमने देखा कि एक सर्ज आया डिजिटल पेमेंट्स के अंदर. एंड यू कैन सी हियर द सर्ज वाज अराउंड 11 ट्रिलियन रुपीस. तो रुपीस 11 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस यहां पर की गई, एंड दैट वाज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर है ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है. ठीक है, सो आई हैव टेकन सम इनपुट्स फ्रॉम द पीपल हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच I have created these questions. So अगर कोई भी करेक्शन है, so make sure कि आप वो मुझे साथ के साथ बता देना चैट बॉक्स के अंदर. I will be making the required correction here. ठीक है, so definitely यहाँ पर करेक्शंस की स्कोप डेफिनेटली रहेगा, बट हाँ यहाँ पर एक चीज है कि क्वेश्चन मेजरली आपके इसी लाइन पर थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं. ठीक है जी, एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं. सो EFTA दोस्तों रिसेंटली इंडिया ने 4 यूरोपियन नेशंस के साथ इकोनॉमिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया. सो ये जो इकोनॉमिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किए हैं दोस्तों, इसके बाद ये टोटल कितने एमओयूज हुए, कितने कंट्रीज के साथ इंडिया ने साइन किया, और यूरोपियन नेशंस में कितने डेवलप्ड नेशंस के साथ ये रिसेंटली साइन किया गया? दैट वाज द क्वेश्चन. द आंसर इज क्वाइट सिंपल, दैट द 4 यूरोपियन नेशंस विद व्हिच दिस एमओयू वाज बीन साइन. दोस्तों यहाँ पर नाम भी नहीं पूछा गया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि कितने यूरोपियन नेशंस के साथ इसको साइन किया गया. ठीक है, आई होप कि मोस्ट ऑफ यू हैव बेसिकली आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो एफडीआई आपने देखा होगा दोस्तों, एफडीआई पर इंडिया बहुत जोर देता है, तो क्वेश्चन सीधा इसी पर आया कि सबसे ज्यादा एफडीआई लास्ट ईयर में कहां पर आई. तो कौन सी स्टेट है जहां पर 24-25 में जिसने मैक्सिमम एफडीआई को रिसीव किया? द आंसर वाज महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र रिसीव्ड द मोस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in the fiscal year 24-25. You can see here guys that how easy this particular question was all about. ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और इसी तरीके से हमें फोकस करना था एग्जाम पर कि कौन सी लाइंस है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन फंड ऑफ फंड्स. सो दोस्तों वी ऑल नो दैट रिसेंटली सिडबी ने फंड ऑफ फंड्स को लॉन्च किया था, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम इसके अंदर कुछ नई कैपिटल डाल रहे हैं. सो उस कैपिटल के बाद व्हाट इज द टोटल अमाउंट विच इज this fund of fund is having? That was the question. So question was basically that recently we expanded the SIDBI's fund of fund for startups
by allocating additional rupees 10,000 crore in the corpus of the scheme. So with the fresh allocation, the scheme's total outlay would reach a total of rupees what amount? And 20,000 crore was there in the options. तो किस किसने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर. Who among you has answered this question correctly in the examination? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन और बिल्कुल डायरेक्ट लाइंस पर था, राइट? तो बजट के टाइम पर भी अनाउंस किया गया था. सो आई होप कि आप में से सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस. तो दोस्तों ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस के ऊपर आपकी 3 स्टेटमेंट्स आई थी. सो इट वाज अ 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. 3 स्टेटमेंट्स. एक तो था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है, वर्ल्ड बैंक करती है, एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर रिपोर्ट. इस साल जो ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस रिपोर्ट आई थी रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, तो इसकी थीम क्या थी ये क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट वाज देयर, एंड वन मोर स्टेटमेंट वाज बीन आस्क्ड. So we were not able to collect that particular statement, but I want your inputs here that you should help us now that what exactly is that particular statement which is missing from here, right? तो अगर कोई भी यहाँ पर incorrection है दोस्तों वो आप साथ साथ correct करते रहिएगा so that we can have this particular paper in a detailed manner so that जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो अगले साल आपकी गाइडेंस के थ्रू अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और इसका ऑफिसर बन पाएंगे, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क के ऊपर क्वेश्चन था. तो रिसेंटली कौन सी स्टेट है जहां पर गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप किया गया? सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज द उड़ीसा. उड़ीसा के अंदर इसको सेटअप किया गया है एंड उड़ीसा इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द वेरी इजी लाइन माय डियर फ्रेंड, G20 समिट. सो जब भी कोई समिट होती है वी ऑलवेज टेल यू दैट व्हाट इज द name of the summit, what is the place where exactly it is happening, which country is the presidency is having the presidency of that particular summit, what is the venue of the summit, what is the theme of the summit. और इसी डायमेंशन पर इस बार क्वेश्चन आया है आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन. वी ऑल नो साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू होस्ट इट. सो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया इस समिट को विद द थीम सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी. सो दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स के अंदर किस किसने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है. सो सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद आप इंश्योर करते हैं कि हाँ मैंने जो तैयारी की थी और उन्हीं लाइन पर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर, सो दैट रियली शोज योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन एंड योर कमिटमेंट टू बी द नेक्स्ट IFSCA ऑफिसर दिस ईयर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सो रिसेंटली अनाउंस किया गया था दैट हरियाणा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है फॉर with the implementation trust for the development of an integrated manufacturing cluster. दोस्तों IMC बनाया जाएगा, IMC बनाया जाएगा हिसार के अंदर. बट इसके लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ ये MOU साइन किया गया, किसके साथ पार्टनरशिप की गई? सो इसके अंदर कौन हेल्प करेगा? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, NICDC. that was there in the option and that is the right answer, and I believe all of you have given this question as the right answer. आप सभी ने इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है and yes you have got +1 in the examination. Absolutely right. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एक और हलवा क्वेश्चन आपके सामने आया एग्जाम के अंदर. What was that question? The question was that इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? Who is presently serving as the managing director of इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? दोस्तों हम सभी जानते हैं रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे IMF के उर्जित पटेल, राइट? तो उस टाइम पर IMF was there in the news and we also covered this that who is the MD of IMF? The answer was Kristalina Georgieva. That is the right answer. Absolutely right. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. The question was tell me the name of the company which become the 8th most valuable automaker in the world. तो 8th most valuable automaker बनी है, जापान की एक कंपनी है और वो उसका क्या नाम है ये आपको बताना था चैट बॉक्स के अंदर. एंड द राइट आंसर वाज मारुति सुजुकी. सो दोस्तों मारुति सुजुकी इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, राइट? और सुजुकी ने तो ई विटारा को भी लॉन्च किया था. तो यहां मारुति सुजुकी न्यूज के अंदर था और आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर व्हाट वाज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड यस एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर इज मारुति सुजुकी. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. जयपुर ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च की थी TOD. तो देखिए कितनी आसान लाइन पर एक क्वेश्चन आया कि TOD जयपुर ने लॉन्च किया और TOD की फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन में आया था. एंड द क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ द TOD वाज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन. दैट इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन था आपका NBFC के फीचर्स के ऊपर. तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था. तो दिया हुआ था कि क्या NBFC जो ओल्ड NBFCs हैं क्या वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है.
वो कौन से एक्ट के अंदर आती हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर आती है नहीं आती हैं। और एक और स्टेटमेंट थी, सो वी वर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द एनबीएफसी फीचर्स क्वेश्चन। तो ये इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यू शुड गिव योर इनपुट्स हियर। आप अपने इनपुट्स दीजिए दोस्तों यहां पर कि क्या था ये क्वेश्चन एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर योर पेपर। ठीक है जी, एब्सोल्युटली राइट आंसर आप सभी ने इसका किया होगा। जब हमें पूरा क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसका आंसर आपको बता पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पे, ओएनडीसी। सो ओएनडीसी बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहता है और यहां पर क्वेश्चन वाज ऑन अ वेरी इजियर लाइन। द क्वेश्चन वाज बेसिकली द मिनिस्ट्री अंडर विच ओएनडीसी इज देयर, और उसको कौन से ईयर के अंदर लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओएनडीसी को रिसेंटली, सॉरी हियर इट वाज नॉट द मिनिस्ट्री, हियर जस्ट इट वाज बीन आस्क्ड कि ओएनडीसी को कब लॉन्च किया गया था, 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था, और ये हमारे एमएसएमईज को किस नेटवर्क के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो यू कैन सी हियर दैट ओएनडीसी इनिशिएटिव है एमिंग टू प्रमोट ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यस, दैट वाज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई बिलीव कि सभी ने यही ऑप्शन चूज किया होगा, दैट इज द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज द राइट आंसर टू दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन और भी इजी लाइन पर था। द क्वेश्चन वाज बेसिकली दैट आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यूज करती है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज, सो दैट कि जो चीजें हम अभी ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लॉन्च कर सकते उसको एक क्लोज सबसेट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, सो दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट दिस टेक्नोलॉजी इज फेसिंग बिफोर फाइनली launching it for the public, right? And that's why we have a regulatory sandbox. So question was related that which one of the following regulatory bodies basically operates the regulatory sandbox। और इंडिया के अंदर दोस्तों आरबीआई है, सेबी है, इरडई है, और तीनों का ही नाम वहां मेंशन था। So the answer to this question was all of the above was the right answer to this question. Absolutely right. So thank you Deepak for giving me some inputs, some valuable inputs that yes, are NBFC deposits insured under DICGC or not? Definitely we will be including that, right? तो दोस्तों ऐसे आप inputs देते रहिए अपने, so that कि हम सेशन के एंड में definitely इन inputs को consider करते हुए we will try to see that okay what kind of question it was and we can have the exact question for all of you। ठीक है, so बाकी चीजें एकदम सही है दोस्तों जो हमने आपको अभी तक बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, रॉयल्स रॉयल्स ने रिसेंटली अपना लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन किया था। व्हाट इज द प्लेस वेयर एग्जैक्टली इट वाज ओपन? बेंगलुरु कर्नाटका वाज देयर इन द ऑप्शन एंड दैट इज द राइट आंसर, बेंगलुरु कर्नाटका। तो दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका वो जगह है जहां रॉयल्स रॉयल्स ने अपना लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन किया था। आगे बढ़ते हैं, सो इन इंडिया वी रन अ स्माइल प्रोग्राम टू बूस्ट इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए देयर इज अ स्माइल प्रोग्राम व्हिच इज बीन रन। क्वेश्चन आपके लिए था कि विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम व्हिच supports India to run the SMILE program? The answer was Asian Development Bank. ADB was the right answer to this question. Absolutely right. So शिवांश is asking sir ये सब क्वेश्चन कहां से कवर होंगे? शिवांश बेसिकली ये सभी क्वेश्चंस आपके जब आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, हमारे करंट अफेयर क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो वहां पर हम ये सभी क्वेश्चंस आपको कराते हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वहां पर ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। Next question was on one of the app which has been launched for the National Logistic Portal Marine and the right answer was Sagar Setu। So दोस्तों हमारे कस्टम्स एग्जाम को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया and the name of the app is Sagar Setu which was been asked in the examination। So दोस्तों till now we have covered 21 questions for you। I hope कि आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी इससे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। So दोस्तों सेबी का एक रिसेंटली सर्कुलर आया था, तो सेबी ने सर्कुलर निकाला था रिगार्डिंग द ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट को मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इक्विवेलेंट। तो दोस्तों पहले इसको हम एक दूसरे तरीके से मेजर करते थे, बट इस साल सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जहां बताया कि हम अब इसको फ्यूचर इक्विवेलेंट के जरिए मेजर करने वाले हैं और डेल्टा बेस्ड ओपन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ व्हाट, किसकी जगह इस नई चीज को लॉन्च किया गया। दोस्तों देखिए, जब भी कोई एक मेजर अपडेट होता है, कोई नई चीज लॉन्च की जाती है, तो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए ये देखना कि कहां से क्या चेंज हुआ है। अगर कोई टाइमलाइन चेंज हुई है वो क्या हुई है, कोई नया सर्कुलर आया है उसके अंदर टारगेट्स चेंज हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं,
कोई नए रिफॉर्म्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, ये हमें कवर करना होता है। अब यहां पर बहुत इजी से पार्ट था कि नॉशनल ओआई से हम फ्यूचर इक्विवेलेंट के ऊपर जाएंगे। सो यस, नॉशनल ओआई इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जस्ट दैट वाज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ डायरेक्ट हेडलाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके IFSCA के पेपर में, तो आपको करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और सेबी का पेपर भी आने वाला है डेफिनेटली गाइस, उसके अंदर ये एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आरबीआई का पेपर थोड़ा डिफरेंट लाइन पर होगा क्योंकि वहां पर करंट अफेयर डोमिनेट करता है, यहां पर ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग सेक्शन का पार्ट था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस। दोस्तों रिसेंटली वन ऑफ द कंपनी विच प्रोवाइड्स ऑफिस स्पेसेस टू द पीपल, टू द बिजनेसेस, राइट, सो उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई के अंदर स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस जो कि आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। और हाल ही में हमने देखा कि वी वर्क ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया, तो वी वर्क भी ऑप्शन के अंदर था। अब यहां आप ही मुझे बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर आपने एग्जाम दिया अच्छे से, आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सा ऑप्शन सही था। देखिए स्मार्ट वर्क तो है जो कि आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है और उसने अपना आईपीओ जुलाई 2025 के अंदर लॉन्च किया। सो दैट कैन बी द क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पर। दोस्तों द क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन द टैक्स व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स for launch for the women. For example, you can see a phenomena where products marketed to women cost more than similar products. तो similar products जो हैं उससे ज्यादा वो कॉस्ट करता है बेसिकली फॉर मेन। सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, फॉर एग्जांपल आपका फेस वॉश, तो ठीक है, तो फेस वॉश मेन के लिए लॉन्च किया गया, विमेन के लिए लॉन्च किया गया, तो वहां पर विमेन के लिए जो लॉन्च किया गया उसकी थोड़ी सी कॉस्ट एडिशनल रहती है। तो यहां पर कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट होता है? द राइट आंसर इज पिंक टैक्स। The tax which is basically launched on the women related products, that is pink tax. Okay, I hope आप सभी को ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों the question was 100% FDI in which sector under the automatic route। तो इंडिया के अंदर दोस्तों आप सभी जानते हैं that under the automatic route they are providing 100% foreign direct investment। सो आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से सेक्टर हैं जिसके लिए ये अप्लाई होता है। लेट मी टेल यू हियर दैट हमारे पास सभी सेक्टर्स के नाम नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहां पर आपको क्वेश्चन का आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन किस लाइन पर था, बट यहां पर इतनी ही डिटेल हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो दोस्तों हम यहां पर देख सकते हैं कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन तो दोस्तों आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस you can see there that 22 plus questions were basically directly from the headline। around 22 क्वेश्चन डायरेक्टली हेडलाइन से थे, प्लस they were from the last 3 months and they were basically one liner based questions। तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया आपका, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, एक रिपोर्ट का क्वेश्चन आया ग्लोबल फिनटेक्स वाला। ठीक है, इसके अलावा आपके फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, क्योंकि पेपर में ऑलरेडी लिखा था कि फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स आपको कवर करने हैं एग्जाम के लिए, और वो पूछे गए, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर दैट पेपर वाज डेफिनेटली ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन जिस पर पेपर आना चाहिए था। ठीक है, सो अंशिका लेट मी टेल यू दैट ये जो एग्जाम एनालिसिस है, देखिए दोनों पेपर्स की डिमांड अलग है। आपका IFSCA का पेपर में करंट अफेयर्स की अलग वैल्यू है, और आरबीआई के अंदर जहां पर करंट अफेयर्स का मेजर रोल है इन बोथ प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि जैसे वन लाइनर बेस्ड आए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट, बट डायरेक्टली आप इसके लिए रेफरेंस नहीं ले सकते। आपके आरबीआई के पेपर के लिए यहां पर डायरेक्ट एक रेफरेंस नहीं लिया जा सकता कि ऐसा ही पेपर आएगा। नो, देयर विल बी रिपोर्ट्स, there will be schemes, there will be other ESI in finance current affairs, there will be other general awareness current affairs as well in the RBI exam, right? So make sure कीजिए कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ठीक है, हाँ, बट जो आगे आने वाले टाइम में सेबी का पेपर आने वाला है, सेबी के लिए आप डेफिनेटली आइडिया ले सकते हैं कि किस लाइन पर पेपर हो सकता है, क्योंकि आज हमने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ देर में आपका पेपर 2 का एनालिसिस भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किन लाइंस पर क्वेश्चंस आए हैं, और उनकी आंसर कीज के लिए भी आपको पूरी हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आई होप गाइस दैट दिस एनालिसिस वाज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो कोमल इज सेइंग
ओके, सो युवराज इज आस्किंग कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए दोस्तों, रिजल्ट अभी अराउंड 10 डेज का टाइम लेकर चलिए, एटलीस्ट 10 डेज इट विल बी टेकिंग फॉर यू कि वो रिजल्ट लॉन्च करेंगे। 10 दिन का टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप अपने फेज 2 पर ध्यान दीजिए। आपकी जो परफॉर्मेंस थी फेज 1 की, वो आपने अपनी बेस्ट दिया है। आई रियली नो, आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू। बट हाँ, अब हमें फोकस करना है अपने फेज 2 के पेपर की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है दोस्तों। अगर टाइम है भी तो क्यों ना उसको रिवीजन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so I can see here in the chat box that there are no queries of the students. तो कोई query नहीं है दोस्तों। I know that आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छे से काम किया। So today you can just definitely have some good rest, but make sure that you are getting back to your phase 2 preparation very soon for your phase 2 exam of IFSCA, right? So I hope guys that today's session was really useful and fruitful to all of you, and still I am open for all your queries. अगर कोई queries हैं, we are just waiting for 1 minute. कोई queries then do let me know in the chat box, otherwise we can conclude the session, right? So my dear friends, it is really important for us to see that yes, what kind of questions are being asked. और हाँ, देखिए जो questions हमने आपको बताए हैं, तो आउट ऑफ 25 अराउंड 22 टू 23 क्वेश्चंस तो हमने आपको डायरेक्टली बता दिए क्या आए थे आज के पेपर के अंदर। बट कुछ एक दो क्वेश्चन जो रह गए हमारे यहाँ से, तो दोस्तों डो नॉट वरी अबाउट इट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप कुछ अपने इनपुट्स दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। वी विल डेफिनेटली टेक योर इनपुट्स एंड वी विल ट्राई कि यस how exactly we can work on these questions so that आपके पास एक proper exact question paper आए उन students के reference के लिए जो कि अगले साल आपके colleagues बनने वाले हैं IFSCA के अंदर, ठीक है? So दोस्तों, with this please allow me to conclude the session as we have discussed all the important parts of the Quant, Reasoning, English and GA for the IFSCA Phase 1 examination which has been held today. So guys, now I will be meeting in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning and make sure you join us for the paper 2 analysis as well.